Good evening, friends, and welcome to another episode of Fund Manager Fridays with 5paisa.com. I'm Deepika Asthana, your host for the evening. Now, the thing is that markets have a mind of their own, up today, down tomorrow, and then up again another day. But despite all of this frivolity, we try to make sense of the markets, and more importantly, we try to gain from these market movements. Obviously, बहुत सारे parameters हैं. There are plenty of things that we follow, we observe, and we assess in the markets. But within this very large universe of factors and metrics that impact the market, today specifically, I would like to draw your attention to certain macroeconomic indicators which can help you in your trading and investment journey. And joining us today to make sense of macroeconomic charts and what they are telling us, we have Mr. Sahil Kapoor, Head of Products and Market Strategist at DSP Mutual Fund. Good evening, Sahil, and a warm Hi, welcome to you. Deepika. Thank you. Thanks for having me. Good to be Pleasure. here. Lovely, lovely. So I think, Sahil, the thing is that when it comes to charts, most of us tend to only focus on stock price action, right? Right. But however, there are many metrics that can give us a sense of market direction. So I think to start with, if we could have your view on the markets more from a medium to long term perspective, and then of course, if you can walk us through some of the bigger metrics that you look at and what they're telling us right now. Sure. So, Deepika, market view largely, as you said, is very dependent on the kind of horizon we are looking at. It could Sure. be very volatile on a daily basis, Mhm. not so volatile on a yearly basis, and maybe less volatile on a 10-year basis. And where we stand today, last 20 months, we've seen a lot of volatility, up and Hmm. down, and it's been a two-way ride. And last 1 month also, we've seen that markets have cracked a bit. So what I Absolutely. feel that over the next 3 to 5 years, it does appear that markets are on a stronger footing. Mhm, जो trend है market का, it still appears to be strong. mhm, Um, I think उसके लिए सबसे important चीज which I would want to highlight is कि अब अगर आप Indian economy देखेंगे, where are we in the cycle right now? I think just okay. like the stock market cycle, that also gives Mhm, us a hint where the markets are going to be in the next 3 to 5 years. ठीक So है. हम लोग अभी एक रिकवरी वी आर टेकिंग ऑन एन इकोनॉमिक रिकवरी. धीरे धीरे Mhm, चीजें जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं. अभी तक पूरी mhm, तरह नहीं हुई है बट दे आर नॉर्मलाइजिंग. mhm. लेकिन मार्केट्स उस एंटीसिपेशन में काफी ऊपर चलेगी ऑलरेडी. Right, तो ये correct, दो correct. पहलू हैं where markets Mhm, have discounted next 2 to 3 years saying that things are going to be wonderful, they are going to be back mhm, to normal. लेकिन mhm. रियल इकोनॉमी अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई है. नहीं हुई है. तो मुझे Mhm, लगता है नेक्स्ट 1 ईयर में इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी और लास्ट 6 महीने से भी हो रही है. तो ये एक डेढ़ साल का ट्रांजिशन फेज जिसको मैं बोलूंगा, जहाँ पे mhm. इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी लेकिन स्टॉक मार्केट शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे. They will not be Okay. like the last 20 months. They might be like Mhm, more in a consolidation phase or mhm, so mhm. to say कि जो gains हमने देखे हैं लास्ट 20 महीने के, they will get digested. Where the Okay. market which is let's say looking a little flabby right now or a little out of shape, it will try to get a bit more fit, right? Healthy. So next healthier, yeah, so next 1 year लगता है market थोड़ी exercise करेगी, consolidate होगी, flab Mhm, निकलेगा थोड़ा. एंड mhm. देन आई थिंक द रनवे इज वेरी स्ट्रांग. और Okay. वो रनवे की मैं स्ट्रांग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में भी रिकवरी स्टार्ट हुई है. सो पहले अगर एक वीकनेस आती है, वीकनेस के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद एक फेज आता है जहां वो रिकवरी एक स्ट्रांग अपटिक में चेंज हो जाती है और उसके बाद डाउनटिक आता है. तो अभी Okay. हम सिर्फ एक रिकवरी फेज में है और उसके बाद Mhm, एक बड़ा 3 से 4 साल का कंसोलिडेशन या स्ट्रॉन्गर ग्रोथ फेज बाकी है. तो वहां पे agree. स्टॉक मार्केट्स विल डू वेल. सो दैट्स द ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक. एंड वी Mhm, कैन टॉक अबाउट सम साइन पोस्ट की आउटलुक क्यों है या किस बेसिस पे mhm. है. वी कैन ऑफ कोर्स टॉक अबाउट दैट. Perfect. So I think before we move on to the signpost, you mentioned a couple of times कि normalize हो रही है, होएगी. How do we as retail investors understand कि what are the things we should look at to understand कि ये normalize हो रहा है? I mean, राइट. we all look at GDP growth, right? But other than that, it doesn't holistically actually give us
a lot to go forward with from a medium term perspective. So just maybe a few things which give you this confirmation ki ha, we are on the path to recovery. There is normalization happening, and because of this normalization, जैसे आपने बोला, we're getting healthy या base building हो रहा है, right? If the base is करेक्ट. strong, then when we take off from there in a couple of years, वो growth will be very strong then, right? So राइट. what is this like normalization? What, how do we श्योर. look at that? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन. और इसमें जीडीपी जैसे आपने बोला सबसे फ्रंट लाइन आइटम है. लॉट ऑफ पीपल वॉच दैट कि ये नंबर Mhm. कितना है, मेक Sure. सेंस ऑफ इट. लेट मी गिव यू टू मोर नंबर्स व्हिच आर मोर, ठीक लेट्स से, रियलिस्टिक. जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की स्टील कंजम्पशन कितनी है, स्टील कितना ठीक है. खपत होती Mhm. है एक साल में. Mhm. मंथली बेसिस पे तकरीबन हम लोग 8 से 9 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं, राइट. Okay. तो अगर आप एक बॉल पार्क 10 मिलियन टन जो हमारा पीक फिगर है वो लेके Mhm. चलते हैं, तो साल का तकरीबन 110-120 मिलियन टन स्टील हम प्रोड्यूस करते हैं. Mhm. और जब ये कोविड हुआ, पैंडेमिक हुआ, ये नंबर Mhm. घट के तकरीबन 80-85 के आसपास चला गया, 80-85 मिलियन टन. अभी लास्ट 3-4 महीने में वो रन रेट वापस 9-10 मिलियन टन अ मंथ चला गया. Okay. इसका मतलब वो नॉर्मलाइज हो रहा है ना. ठीक है. इट इज गोइंग बैक टू इट्स नेचुरल ग्रोथ रेट जहां पे उसको Mhm. होना चाहिए. दूसरा, जैसे Mhm. सीमेंट है, हम Mhm. तकरीबन महीने में 27 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं. Mhm. और वो नंबर जो है वो धीरे धीरे घट के तकरीबन 18 भी चला गया था ड्यूरिंग कोविड टाइम, है ना. Okay. Mhm. नाउ दैट नंबर इज बैक टू 27-28, सेइंग दैट थिंग्स आर नाउ नॉर्मलाइजिंग. सिमिलरली अगर आप पेट्रोलियम कंजम्पशन देखेंगे, जैसे हमारा फ्यूल कंजम्पशन है, डीजल, पेट्रोल, दीज नंबर्स हैड फॉलन डाउनवर्ड्स ऑफ 20% और मोर. ये Mhm. सारे नंबर्स वापस अब प्री कोविड लेवल्स पे चले गए. Mhm. और एक एक अच्छा ट्रैकिंग नंबर है जो इजी टू ट्रैक है, उसको अभी बोलते हैं गूगल मोबिलिटी. Right. तो Mhm. गूगल ने क्या किया, दे क्रिएटेड एन इंडेक्स सेइंग कि कोविड से पहले अगर मैं अपने घर से निकल के ऑफिस जा रहा हूँ, तो जब मैं मैप्स ऑन करता हूँ तो गूगल कैप्चर्स दैट डेटा, Right. तो वो Mhm. बताता है मुझे कि कितने लोगों ने ये डेटा यूज किया. तो गूगल नोस कि कितने लोग ऑफिस गए थे आज, right? तो Mhm. इसी तरह वो हर चीज की जो मेजरमेंट रखते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, कितने लोग ग्रोसरी स्टोर गए, कितने लोग ऑफिस गए. तो ये जो Mhm. मोबिलिटी इंडेक्स है, दैट आल्सो टेल्स यू कि इकोनॉमी कितनी नॉर्मलाइज हुई. तो वो Understood. नंबर भी अब 100 के ऊपर चला गया. दैट मीन्स मूवमेंट और इकोनॉमी काफी नॉर्मलाइज है. हालांकि हाँ, ऑफिस के नंबर अभी भी कम है. लॉट ऑफ पीपल Mhm. आर स्टिल नॉट गोइंग टू ऑफिस, बट Correct. yeah, it Yeah. has normalized a bit. But हाँ, लास्ट 3-4 दिन में जो हमने स्केयर देखा है, मे बी these numbers would have fluctuated. But ये 3-4 different indicators हैं other than GDP, Mhm. which roughly tells you that we are going back to normal. And एक बार हम नॉर्मल हो जाएंगे, then we will go back to our earlier growth phase. जैसे हम पहले ग्रो कर रहे थे, Mhm. तकरीबन इंडियन जीडीपी तकरीबन 5.5-6% रियल टर्म्स में ग्रो Mhm. कर रही थी. मे बी विल गो बैक टू दैट ग्रोथ. Hmm, interesting. So, I think everything that you've said, if I have to really kind of understand it, like say it in my understand it through my perspective, तो bottom line is कि जब recovery होती है, investment होता है, consumption होता है, and as there's more consumption, more investment happens, right? Which is करेक्ट. why the consumption of materials like cement and steel increases. But with respect to that, and I'll just move to something important which I'd also read in this very interesting report that you guys have published on the investment cycle. And there's this one section in that report where you mentioned that India's investment winter is over. राइट. I think it's related to what we just discussed. So maybe you can throw some करेक्ट. light on that. Sure. See, when you look at Indian economy, see, when you look at the GDP, how we measure growth every year. ये GDP होती क्या है? It is the annual product each year. जितना भी एक साल में इंडिया में पैदावार हो रही है, किसी भी तरफ से देखें, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एक साल में जितना होता है उसको जीडीपी बोलते हैं. अभी उसका एक मेजर है उसको कैलकुलेट करने का कि आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को ऐड करें और उसमें से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका जो नंबर है वो ऐड कर दें. अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो नंबर ऐड हो जाएगा, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, right? तो इससे आपको एक साल का जीडीपी मिल जाता है. अब कंजम्पशन क्या है, जो हम रोजाना we consume everything, from whatever FMCG goods to cars to automobiles to whatever, all that constitutes consumption. And it's a very very crude way of putting it, but yeah, these items. Investments क्या होता है? Anything where we create fixed assets, जहाँ हम ऐसी assets create कर रहे हैं जो लंबे समय तक हमें काम आने वाले हैं.
तो जस्ट टू गिव यू वेरी वेरी क्रूड एग्जांपल्स, ब्रॉड एग्जांपल, अगर हम रोड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्ट्स बना Mhm. रहे हैं, एयरपोर्ट्स, Mhm. ये ऑल दीज कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट्स। Sure. तो जब भी हम 2000 या 2008 के पीरियड में जाएंगे, इंडिया ने ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये Mhm. बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट साइकिल एक देखा, जहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में हुई, बहुत सारी Mhm. रोड्स बनी, पोर्ट्स बने, क्योंकि ग्लोबली ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फ्लेवर बहुत स्ट्रांग था। Sure. बहुत Correct. सारी कंपनीज जो हैं उनकी कंजम्पशन बहुत हाई थी, तो उनको लगातार इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती थी। Mhm. तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ Mhm. और मेरे पास रफली लेट्स से 10 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है, जस्ट अ वेरी स्मॉल पर्सन, Mhm. स्मॉल कॉर्पोरेट। तो और समझ लीजिए मेरी जो एनुअल सेल्स है वो भी 10 मिलियन टन्स हो गई। तो अभी Mhm. मुझे अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू इन्वेस्ट मोर और कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मैं और Sure. सीमेंट प्रोड्यूस कर सकूं, राइट। तो ये जो एडिशनल मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, ये सारा इन्वेस्टमेंट की तरह जाएगा। Mhm. तो जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो कंजम्पशन लगातार बढ़ती जाती है। तो Mhm. as you said, a lot of companies have to do a lot of investments, and Right. that investment from 2002 to 2011 had a phenomenal growth rate. India was growing at 17-18% YOY every year. That was a kind of growth rate for investments in Mhm. India. From 2012 onwards to, let's say, 2021, if you look at the whole cycle, that growth rate fell less than half. It went to seven Correct. and a half, 8%. और Mhm. कोविड की वजह से तो लास्ट 5 साल में ग्रोथ रेट 6.5% हो गया था। इट वाज सो लो। Mhm. आई थिंक इट्स द लोएस्ट सिंस 1960 also. Okay. And Mhm. now what we've seen, a lot of companies are again coming back in their commentary, in their body language. They are saying that Mhm. this number is not going to go up. We are going to do some investments, and Mhm. this number is going to normalize. तो हमें लगता है Okay. कि इन 2020-21 ये जो Mhm. इन्वेस्टमेंट्स टू जीडीपी है, जो ओवरऑल नंबर है, दिस हैज Mhm. बॉटम आउट। Okay. worst Mhm. worst phase is behind us. Now we are going to see a lot more investments coming up. और इसके बहुत Mhm. सारे रीजन हैं, मे बी वी कैन गो इनटू डिटेल एट अ लेटर डेट, बट कुछ Sure. रीजंस हैं जहाँ पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा है। चाइना से Mhm. मैन्युफैक्चरिंग निकल के इंडिया में आ रहा है Right. ना। देयर इज अ Mhm. लॉट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड व्हिच इज ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट। केमिकल Mhm. सेक्टर है जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड Mhm. इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबसे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस is what is helping us getting this strong investment cycle going up. So, Perfect. Perfect. as I Mhm. written, investment winter is over, so I think maybe there is a spring which is coming up for investments. Certainly, certainly. I can see that. I can see. I mean, there is great logic in this, right? I mean, it's like they say, the economy is also circular in nature, right? Everything Correct. passes from one to another, and if there is even one cog in that wheel where you get that impetus, oh, Sure. it starts Yes. moving, right? So I Yes. can completely understand where this is coming from. Also, I think we've discussed some very interesting, unique, and heavy duty stuff. Maybe we can also move on to some metrics which are very commonly known. Like we're always talking about month on month inflation numbers. On a Right. weekly basis, we're looking at interest rate numbers. And especially now, uh, I think since the GFC, since 2008, both inflation and interest rates have suddenly, it's there in every investor's dictionary, right? Everybody Correct. understands this. So now going forward, especially now because all the liquidity taps they're turning off, kya ho raha hai, interest rates will go up. Can we get some view from you in terms of where you Sure. see the inflationary and interest rate trajectory and how that impacts market in the medium term? Sure. So one leaf I'll take out from my earlier answer is where I said that things are normalizing. Right? Oh, okay. And when things normalize, whichever excesses in the wrong direction that we had, Mhm, many things had mhm, fallen significantly, then they came back, right? So mhm, even for that matter, when COVID hit us, there were two kind of disruption. One was a supply side disruption. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री बंद हो गया, तो जहाँ वहां mhm, पे जो भी प्रोडक्शन थी वो बंद हो गई, तो उसकी वजह से जो उसका एंड प्रोडक्ट है, दोस प्राइसेस वुड हैव गॉन अप, sure. which Mhm, caused a lot of inflation in the system. It is still causing that globally, जो mhm, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन की तरफ से है। और दूसरी साइड इन्फ्लेशन कैसे होती है, जब डिमांड बढ़ती है, राइट। mhm, mhm, अगर right. किसी भी प्रोडक्ट की शायद सप्लाई सेम रहे लेकिन डिमांड बढ़ती है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है, राइट। Correct. अभी ये कोविड के टाइम पे क्या हुआ, हमने दोनों का फ्लेवर देखा। एक तो सप्लाई कर्टेल हो गई सब जगह पे, वी सॉ Mhm, सप्लाई mhm, स्क्वीज अक्रॉस द साइकिल, प्लस mhm, लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट गेव लॉट ऑफ स्टिमुलस, राइट। right. Mhm, US gave a huge
$8 trillion stimulus, multiples Correct. of $1 trillion, close to Mhm. $8 trillion in stimulus, right? India Mhm. gave a lot of economic packages. Many countries across the world gave similar packages. Mhm. That boosted demand to some extent, where people were not earning a lot, but they were getting free money from many governments across the world, Right. specifically in US. Right. So inflation flared up because of both the angles, but in many countries it flared up largely because of supply issues. For Right. example, in Mhm. India, inflation has not really been very volatile. It has been between 4 to 6% or 6.5%, the Mhm. consumer price inflation, Mhm. and largely driven by factors कि domestically I think inflation readings जो हैं वो बहुत stable रही हैं rather than being very high. जैसे अगर आप Understood. comparative पीरियड देखोगे जब Mhm. 2012 या 13 में when commodity prices rebounded and reached all time high, Indian consumer inflation actually hit double digits. Mhm. So Right. this Mhm. time it is not so high, but it is still at the higher end of the range where Right. we Mhm. stand today. So जैसे Mhm. जैसे economy normalize होगी, inflation will remain at the higher range and maybe Mhm. closer to 5.5 6%. So Okay. next 2 3 महीने में we'll see that kind of inflation, 5.5, Okay. 5.8 6%, Mhm. Mhm. and that will also cause interest rates to maybe normalize a bit. अभी वो they are extremely low. No. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो हमारा 10 ईयर बेंचमार्क रेट है, Mhm. वेयर 10 ईयर यील्ड जिसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, अभी 635 के आसपास है, 6.35%. Mhm. It was not at 6.35% for a very long time. This is like closer to its all-time lows in terms of when you look at yearly data. अगर आप पिछले Mhm. 20 साल का Right. डेटा देखें, Uh-huh. so maybe it will normalize a bit, maybe it will go up 15-20 basis points or so. और Mhm. जो आरबीआई के रेट्स हैं, जो कि अभी रेपो रेट 4% है, वो Right. शायद बहुत डिप्रेस्ड है. Right. तो Mhm. RBI will try to take its benchmark rates higher, maybe not repo rate, but there are other kind of rates which are more technical in nature. लेकिन जो Mhm. शॉर्ट टर्म रेट्स जिसको बोलते हैं, जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, मे बी जो 1 ईयर और ओवरनाइट रेट्स जो हैं, 1 ईयर बोरोइंग लेंडिंग रेट्स, मे बी दे विल Mhm. मूव अप अ लिटिल बिट फ्रॉम वेयर दे आर राइट नाउ. So, Mhm. but I think in the next 1 year, we are probably still going to see more stability in terms of inflation Okay. and interest rates rather than any Mhm. large volatility. That is how I And see it. okay. So आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोविड के टाइम पे हमने बहुत वोलेटिलिटी देख लिया in most indicators, most markets. Right. Maybe we'll Mhm. have a period where there'll be less volatility, at least for the next 6 months or so. Sure. Sure. I think also this ties back to what you initially said, right? In maybe a year or two, there'll be some sort of stability. And if the indicators are stable, Right. then even the markets, which kind of feed from these indicators, will also be like, wait, like we just discussed, this whole Yes. foundation building exercise will happen. Correct. Sahil, I know, I mean, you explained this really well, but I just have this one very small question. So, Please. we are now entering an era where interest rates could marginally go up, right? So, Right. interest rates goes up means cost of funding goes up, right? Correct. So, from that perspective, do you think it could have any impact on this entire investment cycle that we are now so heavily, very optimistic about, right? So, Yeah. कुछ impact आ सकता है, or you think it will be a negligible impact and we still be on the trajectory that we're currently on? See, it's a question which will have an answer when we know कि ये interest rate कितना बढ़ते हैं ऊपर. For example, Okay. let's assume that if interest rates goes up by only 50 basis points, I think Okay. the impact will be marginal. It will not be Sure. high Mhm. because we are already at levels which are very low for interest rates. Correct. And Mhm. secondly, if let's say if it is a very large change, let's say 200 basis point 2% interest Mhm. rate बढ़ जाते हैं, of Mhm. course it will have an impact. Understood. So, but I think our central bank is right now more focused on growth. Their Growth. strategy is to Mhm. focus key growth should be Mhm. more stable and more equitable. I think that Mhm. is the focus area. Then probably you can say that both investment and consumption are likely to grow rather than squeeze out or then reduce. So Understood. I'm more optimistic on this scenario. Perfect. Perfect. That does make sense because anything over the last, I think, 1 year to 18 months, the RBI has said they've constantly reiterated that growth is focus for Yes, them. So, right. so we also have one of our viewers, Mr. Vikram Singh, who's got a question for us, and he's asking us how inflation
could probably affect the earnings of companies. Yes. So I think inflation जो है it eats away a lot of what do you call margins. You know, a lot of Mhm, companies will probably have poorer margins if inflation is higher. Okay. mhm. और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं कंपनी के दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन देयर ओन रॉ मटेरियल कॉस्ट राइट Right. अगर Mhm, और रॉ मटेरियल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ कॉस्ट ऑफ द अंडरलाइंग stuff that companies themselves are consuming, you know, how does mhm, that move? So mhm. let me share an unpublished chart with you, probably which could throw some more light on what I'm saying right now. Yes, please. So have a I, look at this. If my screen is visible, yes, if you sir. can see this, right? So look at this. You know, this is a chart which shows listed non-financial companies' net profit margin. You know, profit Mhm, margins of listed companies. You mhm, see, it has gone up sharply. You know, a mhm, sharp acceleration, right? mhm, And mhm. when you look at this black line, it shows you India wholesale inflation minus the retail inflation, right? Okay. So wholesale inflation tells you how much inflation companies are facing, right? Mhm. And retail inflation tells you how much inflation consumers or retail people are facing, right? Sure. So when Mhm, this line goes up, that means companies are facing very high inflation. And if their mm, margins have already increased and now they are facing high inflation, two things are possible. First okay. is they will pass on their cost. अगर उनका अपना कॉस्ट बढ़ रहा है जैसे just to take an example एक कार मैन्युफैक्चरर है Mhm, अगर उसका स्टील और अदर इनपुट प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इट कैन mhm. जस्ट गो एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द एंड कार इन द मार्केट राइट Right. एंड यू नो बी डन विद इट तो कंज्यूमर को वो महंगा पड़ेगा लेकिन अगर वो अपना प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रहा है क्योंकि Right. उसको पता है मेरा डिमांड हिट हो जाएगा तो उसके Right. मार्जिन कम हो जाएंगे राइट वो Mhm, अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेगा सो mhm, दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स द यू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी आप देखेंगे ये दोनों लाइन साथ साथ ही चलते हैं जब भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो प्रॉफिट mhm, मार्जिन वापस कम हो जाते हैं राइट mhm, सो mhm, mhm, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 1 ईयर में दीज प्रॉफिट मार्जिन आर प्रोबेबली गोइंग टू सी सम रिडक्शन जो अभी लास्ट एक mhm, साल में इतने बड़े हैं मे बी दे विल पुल बैक अ बिट बिकॉज इनपुट mhm. प्राइसेस आर स्टिल वेरी हाई Right, right, right. Right. So basically, वही है ना that your cost increases and your ability to increase your selling price. Maybe it यस doesn't increase in the same करेक्ट level, right? Yeah, So it that's really depends on how consumers are behaving. Yes. how consumers are behaving, right? तो इसलिए there's a squeeze on the profit margins, and what you're saying is कि right now because the demand environment is still a little uncertain. I think Yes. we've not really come out of the entire COVID impact. And Correct. because of that, maybe in the next 1 year, we could see a little bit of squeeze in profit margins. That's right. That's right. Okay, perfect. So, I think one more important factor that I would really like to discuss is crude prices. I think Sure. that's a factor which we can't take out of a narrative. So, Correct. it's also been fairly volatile. I think over the last couple of months, and there is a lot of talk about how India's dependency on external crude as a percentage of total GDP वो थोड़ा reduce हो गया है. So maybe the impact might not be that high, but just your thoughts on where crude is heading, what is impacting the price movement, and how India will get impacted Sure. subsequently. So मेरे कुछ पब्लिक रिमार्क्स हैं पहले भी मैंने हाईलाइट किया है that Thank you. crude until it is below $85 Mhm. it's not a big worry for India. Right? अगर वो Okay. $85 $90 के ऊपर चला जाता है then it becomes a worry for India because Mhm. अगर आप नंबर देखोगे we import nearly 100 and 40 to 50 billion dollars of crude every year और Mhm. उस क्रूड के सामने हम तकरीबन 40 टू 45 बिलियन री एक्सपोर्ट करते हैं मतलब हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो क्रूड इंपोर्ट करती हैं और क्रूड प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर देती हैं राइट तो Okay. तकरीबन $100 बिलियन का नेट बिल आता है हमें क्रूड ऑयल का राइट Mhm. ये $100 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर था जब हम 2012 या 13 में थे Mhm. मुझे याद है कि 2012 में $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट उसके आसपास आ गया था जो कि Mhm. हमारी जीडीपी का 5% था Mhm. तो अगर आप सोचिए कि अगर आपका डेफिसिट जो ट्रेड डेफिसिट जितना आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं आप उसके लिए डॉलर्स में पेमेंट करते हैं right? Right. Mhm. और अगर आपके पास डॉलर्स की कमी है इफ यू डोंट हैव इनफ डॉलर्स इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री राइट देन द करेंसी फेसेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रूपी वीक होने लगता है
डोमेस्टिकली आपकी इन्फ्लेशन ऊपर चली जाती है, क्योंकि ऑयल महंगा होगा तो सबके इनपुट प्राइसेस बढ़ बात करेंगे। जाएंगे, एवरीबडी विल फेस रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर, राइट। हम्म, और कंज्यूमर्स के लिए भी ऑयल महंगा हो जाएगा तो उनके भी जो हाउस होल्ड बजट्स हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। यू विल करेक्ट स्पेंड मोर करेक्ट। ऑन पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन राइट। अभी ये नंबर जो है वो लास्ट 7 साल में सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा नहीं है। तो इस हम्म, समय कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा प्रेशर इसलिए क्योंकि ऑयल पे टैक्सेस ज्यादा हैं। तकरीबन अगर करेक्ट। 110 रुपए का पेट्रोल है तो उसमें से तकरीबन 55-60 रुपीज आर इन टैक्सेस, राइट, विच हैव बीन रिड्यूस्ड रिसेंटली बट स्टिल दे आर हम्म, हाई। right, लेकिन ओवरऑल एट अ कंट्री लेवल वी हैव अ लॉट ऑफ बफर, वी हैव अ लॉट ऑफ बफर इन टर्म्स ऑफ our denominator, that means the GDP, the size of the economy is larger now. yeah, तो हम हम्म, we can easily you know see oil at 80-85 and still be fine with it. Lekin if it starts going above $85, then it becomes a हम्म, problem. Also, हम्म, let me show you a table which will sure, probably highlight what I'm saying more clearly. And when you look at this slide, which is here, I hope it is visible now, right? आप ये देखिए कि ये FY13 जहाँ पे ऑयल FY12 में बढ़ गया था, क्रूड हाँ ऑयल जी, आई थिंक वेंट टू अबाउट $110 एट दैट टाइम, हम्म, इट हैड बिकम अ हम्म, बिग प्रॉब्लम फॉर अस। उस समय हम्म, हमारे सारे जितने भी इंडिकेटर्स थे, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में था, हम्म, हमारा करंट अकाउंट -4.8% था, बहुत बहुत वेरी वेरी नेगेटिव, राइट। हम्म, एक्सटर्नल डेट जो है इज ओके, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। फॉरेक्स रिजर्व 293 बिलियन डॉलर्स, हम्म, right, which is the point which I wanted to mention. Right now it's at $640 billion, a very very हम्म, strong number. We have a lot of FX reserve. हम्म, Inflation is a little on the higher end but still very very normal in terms of okay, where we are in the economy. और हमारा हम्म, current account भी -1% है, which is a good number. Ex of right, COVID, this is one of the better numbers we had in last 10 years, right? sure, और external debt भी high नहीं है, so we are not facing a lot of pressure right now. Most of our हम्म, macro indicators are very very stable. Or I think oil is not a big problem right now until unless it remains below 80-85 dollars. perfect. Perfect. Just one more thing, just your view on the oil price trajectory, keeping the global demand supply environment or Sure. landscape in mind. So there is a lot of expectation that oil prices will go up because Mhm, there is a huge supply cut. OPEC, as you know, Organization of Petroleum Exporting Countries, it's a cartel where all exporters have gotten together for the last 50 years, and they mhm, control the market, right? mhm, So whenever there is a reduction in demand, they cut the supply so that the mhm, prices are maintained right now. mhm, So right now, what they've done, they've curtailed supply to a very large extent, and there is a mhm, expectation that because they are not supplying, तो oil prices ऊपर चले जाएंगे, right? right. Mhm, मेरा expectation है कि market का जो overall economy level demand है, globally demand, it mhm, has gone back to roughly to pre-COVID levels, around 100 million barrels a day plus पे चला गया है वो number वापस, लेकिन mhm. it is not strong enough for oil to take oil back to $100. तो Okay. मेरा मे बी अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है यहाँ पे। आई थिंक Mhm, ऑयल विल प्रोबेबली रिमेन बिटवीन $60 to $70 फॉर द टाइम बीइंग, and it will probably it can move around a lot more than what I'm saying, but the rough mhm. ranges where it settles in a year will be closer to these numbers right now. So I will not be overtly concerned with oil. Understood. Perfect. So I think we have discussed in very good detail some of the bigger parameters and also, absorbed your views on these metrics. So just would you like to maybe sum up some of the key things that you would like to again Sure. reiterate for our audience? Sure. See, from an investment perspective, I think we are still probably in the early days of the overall cycle. I think we have a lot of years ahead जहाँ पे Sure. market बहुत अच्छा करेगा. Mm-hmm. Maybe we'll have 6 months or 1 year consolidation phase where जो लास्ट एक साल में जितनी तेजी हमने बाजार में देखी, मे बी उतनी नहीं दिखेगी, कुछ कंसोलिडेशन होगी, थोड़ी गिरावट होगी, which is a Mm-hmm. time where you also accumulate your investments, where you Mm-hmm. inculcate more discipline. आप अपने disciplined way में you continue to invest. I think that is the learning that we should carry for the next 1 year. And I think India probably is the only country where the growth outlook is very clear, that the growth is there. And when you Mm-hmm. pick up any other country in the world,
either you have a question कि growth होगा या नहीं होगा, or you have an answer कि growth नहीं हो सकता. नहीं होगा. So India is the only country where the answer is affirmative, yes, that there is going to be growth. So as an investor, you only have to be optimistic at the right time, and you should know how much are you paying for your investments. I think these two are the only things that you should be doing. Superb. I think that's perfect. And what you said right at the very end, that key, this is a period also for us to, if the market is stabilizing and getting ready for the next period of growth, for us as retail investors, it's a good time to accumulate, invest in a systematic manner. My go-to choice of vehicle is always a systematic investment plan, Yes. and that's the best way to accumulate and get ready for the next leg of growth, which, as you say, by all accounts should be a strong growth, because currently the landscape is such and the metrics that we discussed are such, it indicates stability from here on. So Yes. that is Yes. my biggest takeaway, and thank you. I think it's definitely food for thought for all of us as we go into this weekend. कि how do we now? Because क्या हुआ है कि अभी recently with all of this volatility, for the last 18 months, honestly, सबको लगा कि हाँ भाई पैसे डाल दो and markets will go up. But this has also reminded us the importance of things like discipline, accumulation, and SIPs. So Yes. this conversation comes at a very opportune time. So thank you very much, Thank sir, you. for joining us today. Thank, thank And you, Deepika, for your time and inviting me. Thanks. always a pleasure. And thank you, viewers, for tuning in. We will see you next Friday. Thank you. Thanks.